So hi students, myself Azim sir. So we're going to the chapter solid state. So this is the fourth part of the chapter. In today's topic, we will discuss with a packing of particles in a crystal structure or packing of solid. How the particles or how the atoms can be arranged. How the atoms can be arranged in a different way in order to give a strength or in order to find out how the solid will be more dense or more strength. Okay, so here we will see the packing of particle in a crystal structure in different ways, that is called as close packed structure. Okay, in close packed structure it is further subdivided into three. First, close packed in one dimension. Second, close packed in two dimension, which includes hexagonal close packing and square close packing. Last, close packing in two dimension. In that, we will see the stacking of square close packed layer AA types, stacking of two dimensional hexagonal close packed layer, and placing third hexagonal close packed layer, that is ABC types. Okay, so very interesting place. Here you have to imagine. Okay, आपको concentrate करना होगा, कुछ imagine करना होगा, तब जाके ये topic आपको easily समझेगा. Now here the first one, that is close packed in one dimension. So this is a close pack in a one dimension. Here the spheres are aligned in a single row. Yes, and in this arrangement each sphere is contact to of its neighbor. Okay, if I talk about this sphere, yes, if I talk about this sphere, okay, so this sphere is contact to two neighbor. If I talk about this sphere, so this sphere is contact to the two neighbor. So I can say that here the coordination number will be 2. So thus in one dimension close pack arrangement, the coordination number is 2. Okay, so this about the one dimension layer. Next one, close packed in two dimension. Okay, now please here close packed in two dimension is two type. One is a square close packing and second is a hexagonal close pack. Okay, now please here इस structure में देखो, अगर ये आपकी क्या है वन डायमेंशन लेयर, ये सिंगल अगर लेयर अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो वन डायमेंशन. अब इसके ऊपर मैंने एक लेयर और ऐड कर दी, सेम लेयर और ऐड कर दी, आई एम गो ऑन एडिंग. सो ऑल आर ऑन दी सेम अलाइनमेंट. कि मैं बोलूं अगर ईच स्फीयर या ईच एटम इज अलाइंड वर्टिकली, यस, here each atom is aligned vertically as well as horizontally. हर एक एटम एक दूसरे को अलाइन है वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. इफ आई टेक एनी ऑफ द मिडल एटम, ओके, अगर इसको मैं सिलेक्ट करूं ये एटम को, तो देखो ये जो एटम है, यस, ये जो एटम है या जो ये स्फीयर है, यू कैन से स्फीयर बोलो या एटम बोलो, तो ये जो एटम कितने नेबर को टच हो रहा है, यस, 4. तो आई कैन से द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4. ओके, नेक्स्ट वन, this is called as a crest. Okay, this is called as a crest. Okay, तो इस स्फीयर का crest इस स्फीयर के crest के साथ में अलाइन है. This is called as a crest and this is called as a crest. So crest. Okay, so crest is aligned with the crest and trough is aligned with the trough. Okay, this is a trough part. So trough is aligned with the trough, crest is aligned with the crest. So the sphere of the two rows are aligned vertically as well as horizontally. In this arrangement, each sphere is contact with the four neighbor. Yes, इस arrangement में क्या है, four neighbors है. Thus the two dimension coordination number will be 4. Also
If the center of four immediate neighbor sphere are joined, a square is formed. Yes, क्या form हो रहा है? इसका सेंटर, इस सेंटर और ये सेंटर को हम जब मिलाएंगे तो क्या होगा? स्क्वायर फॉर्म हो रहा है. तो दिस पैकिंग इज कॉल्ड एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 dimension. Okay, understood? So please, what are the points should be remembered? In this structure, sphere is aligned vertically as well as horizontally. Each sphere is contact with the 4 neighbor sphere. So coordination number will be 4. And center of the 4 neighbor sphere contact. So there is a formation of the square. तो इसको हम क्या कहते हैं? Square close pack in 2 dimension. Next one is a hexagonal close packing. Okay. In case of the hexagonal close packing, the arrangement is little different. This is a 1 dimension. I kept another 1 dimension, another 1 dimension, and another 1 dimension. So it generation of the 2-dimensional structure, but it is little bit different. If I say this is a A layer and this is a B, A, B. So in this arrangement, the first layer is aligned with the third layer, and second layer is aligned with the fourth layer. मतलब जो फर्स्ट लेयर है वो किसके अलाइनमेंट में? थर्ड लेयर के. और जो सेकेंड लेयर है वो आपके फोर्थ लेयर के अलाइनमेंट. ओके. एंड इफ आई सिलेक्ट एनी ऑफ द स्फीयर, आई सिलेक्ट दिस वन. यस. तो ये जो स्फीयर है वो कितने नेबर को टच हो रहा है? इट टचिंग 6 of its neighbor. So I can say here in this structure the coordination number will be 6. Okay. Now here the space is forming here. Okay. ये जो space form हो रही है, yes, जो खाली जगह फॉर्म हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? void कहते हैं. क्या कहते हैं? void. और ये जो ये पार्ट है इसको हम apex कहते हैं. क्या कहते हैं? This is called as a apex. तो अपाइसेस ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड, इसका अपाइसेस, इसका पॉइंट ऊपर जा रहा है और इसका कहां पे आ रहा है? नीचे. इसका ऊपर और इसका पॉइंट नीचे. सो सेम हियर इन केस ऑफ द 2 dimension AB types arrangement, the apices of triangular void is pointing upward, downward, upward, downward, upward, and downward. And here this is called as this empty space which is forming is like a triangular. Yes. So this is called as a triangular void. Please remember the point. Whenever the spheres are joined to each other, जब भी कोई भी स्फीयर एक दूसरे ज्वाइन होता है और उनके बीच में जो स्पेस फॉर्म होती है ना, ये व्हाइट कलर की स्पेस दिख रही है आपको, जो स्पेस फॉर्म हो रही है इसको हम क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं. एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज वॉइड. अब ये एम्प्टी स्पेस का जो शेप है वो कैसा है? ट्रायंगुलर फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड. क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड. तो a sphere is surrounded by how many triangular void? Yes, if I say this sphere surrounded by how many triangular? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So in case of hexagonal, अब now please say कि यहाँ पे 6 नेबर स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन करने के बाद हेक्सागोनल फॉर्म हो रहा है, हेक्सागोन फॉर्म हो रहा है. तो इसको हम कहते हैं hexagonal close packing structure. Yes. So each sphere is contact with 6 of its neighbor and 2-dimensional coordination number is 6. The center of 6 sphere are at this corner of the regular hexagon, hence the packing is called as 2-dimensional hexagonal close packing. It can be seen that the layers of same void, that is empty space, are in a triangular shape. Yes, triangular shape में. The triangular voids are of 2 different types. In one row, the apex of the triangular are pointing
upward and in the next layer downward. Here इस layer में upward, इस layer में downward, upward, downward. Okay, so this is a closed packed structure of 2 dimension, that is AB types arrangement. Now packing in 3 dimension. Packing in 3-dimensional structure, here see in this arrangement, in this arrangement ऐसे ये जो आपकी जो नीचे वाली जो लेयर है ये आपकी 2 डायमेंशन A टाइप्स अरेंजमेंट है ना, 2 डायमेंशन A टाइप्स अरेंजमेंट. अब उसके ऊपर मैंने सेम लेयर चढ़ा दी, फिर उसके बाद सेम लेयर चढ़ा दी, फिर सेम लेयर मैंने ऐड करते गया. तो ये क्या बन गया? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द 3-dimensional structure. Now in this 3-dimensional structure, each layer is aligned vertically as well as horizontally. हर एक एटम एक दूसरे की अलाइनमेंट में वर्टिकल डायरेक्शन में भी है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी. एंड हियर इफ अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन कट करेंगे, यस क्रॉस सेक्शन कट करेंगे, तो ये आपको एक सिंपल क्यूबिक सेल देगा. कौन सा सेल देगा? सिंपल क्यूबिक सेल. हमने पढ़ा है ना सिंपल क्यूबिक सेल. तो सिंपल क्यूबिक सेल विच कंसिस्ट ऑफ वन एटम. सिंपल क्यूबिक सेल को हम प्रिमिटिव क्यूबिक सेल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रिमिटिव क्यूबिक सेल. तो प्लीज याद रखना ये आपके जो 3-dimensional स्ट्रक्चर है, each sphere is aligned vertically as well as horizontally and it gives rise to a simple cubic cell. Now very important point, अब यहाँ पे अगर मैं सपोज ये एटम को सिलेक्ट करूं, सपोज ये ऊपर वाला फेस एटम को सिलेक्ट करूं, तो मुझे बताओ ये जो फेस एटम है वो कितने सेंटर को टच हो रहा है, मतलब ये लेयर के ऊपर ये कितने लेयर पे 4 नेबर एटम को क्या हो रहा है? टच हो रहा है. अब ये अगर ये एटम पीछे कितने को टच करेगा? 1 को, बिकॉज ये एक ही डायरेक्शन में. अगर सपोज इस लेयर के नेक्स्ट फिर एक लेयर और अगर हम आगे से लगा देंगे, फ्रंट से अगर मैं एक लेयर और कर दूं, तो ये जो आपका जो स्फीयर है जो आपके लेयर में प्रेजेंट है वो फ्रंट वाले को एक को टच करेगा. तो this atom touches 6 neighbor. Once again 4 on the layer, 1 back, 1 front. So coordination number will be 6. Okay, so here in this arrangement it can be seen that a simple cubic structure, each sphere touches 6 neighbor sphere, 4 in its own layer, 1 above, 1 below, and the coordination number will be 6. Next one, very important, please. Stacking of hexagonal close packed layer, that is AB types of arrangement. Here we have seen 2-dimension AB types arrangement. तो अगर उसकी हम एक लेयर, ये आपकी 2 डायमेंशन नीचे वाली जो लेयर है, नीचे वाली लेयर 2 डायमेंशन AB टाइप्स अरेंजमेंट, उसके ऊपर फिर हमने 2 डायमेंशन AB टाइप्स अरेंजमेंट डाला, फिर नेक्स्ट AB टाइप्स AB, तो ये क्या जनरेट हो गई? 3 डायमेंशन. हम इस तरह अरेंजमेंट करेंगे. लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है? देखो ये ब्लू वाली A लेयर है, ये ऑरेंज वाली B लेयर, A लेयर B लेयर A लेयर B लेयर. इसका मतलब क्या कि जो फर्स्ट लेयर है, जो उसके जो एटम है वो आपकी 3rd लेयर के साथ क्या होगी? अलाइन होगी. और जो आपकी सेकेंड लेयर है वो आपकी 4th लेयर के साथ क्या होगी? अलाइन होगी. फर्स्ट लेयर इज अलाइन विद द 3rd लेयर एंड सेकेंड लेयर इज अलाइन विद द 4th लेयर. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ वी टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर. Now we know that in case of the hexagonal, okay, in case of the hexagonal, spheres are contact, there are 6 neighbors. Hexagonal में क्या होता है? स्फीयर
कितने नेबर स्पेस से कांटेक्ट करता है? 6 नेबर से। तो मतलब ऑन द लेयर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 होता है। लेकिन इन दिस अरेंजमेंट कि दिस स्फीयर, ये जो स्फीयर है लेयर के ऊपर ऑन द लेयर, ये 6 से तो क्या होगा? जॉइंट होगा। लेकिन ये जो लेयर है नीचे 3 लेयर से अरेंज होगा, जॉइंट होगा, और 3 ऊपर से। होप यू अंडरस्टूड कि जो ये जो जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, ये जो सेंटर स्फीयर है, दिस सेंटर स्फीयर इज अगेन टचेस 3 below and 3 above. So I can say 3 above and 3 below. So coordination number कितना होगा? Yes, 12. On the layer 6, above and below 3. So this center sphere touches 12 neighbor sphere. So coordination number will be 12. And here please, here the empty space or void is generated, a new void is generated, is called as tetrahedral void. So please here, all the triangular voids of the first layer are not covered by the sphere of the second layer, which gives rise to a different arrangement. यहाँ पे थोड़ा arrangement different होता है. The area where a sphere of the second layer is above the void of the first layer, that is vice versa, a tetrahedral void is formed. I will show in another figure how the tetrahedral void is formed here. These voids are called tetrahedral void because a joining of the center of 4 sphere give rise to a tetrahedron. So in the next slide you can see here, देखो ये जो आपकी नीचे वाली जो आपकी जो लाइट कलर है, ये लाइट कलर, ये आपकी फर्स्ट लेयर है. ओके, दैट इज अ ए लेयर. जब ए लेयर सिंगल लेयर थी तो क्या हो रहा था? एक ट्रायंगुलर वॉइड जनरेट हो रहा था, ट्रायंगुलर शेप, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं. अब इसके ऊपर मैंने जब सेकेंड लेयर चढ़ाई तो सेकेंड लेयर क्या हो रहा है? देखो सेकेंड लेयर की जो स्फीयर है, जो सेकेंड लेयर के जो स्फीयर हैं वो आपके इस ट्रायंगुलर वॉइड को क्या कर रहे हैं? हाइड कर रहे हैं. यस, तो जब ट्रायंगुलर वॉइड को जब हाइड करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू वॉइड जनरेट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड. सो हियर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स आर जनरेटेड. वन इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड सेकेंड इज अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. वंस अगेन, अब देखो जब हम यहाँ पे ये लेयर चढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक स्पेस फॉर्म हो रही है. जब यहाँ पे हम लेयर चढ़ाते हैं तो इसके बैक साइड यहाँ पे क्या हो रही है? टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है. देखो ये नीचे वाला जो लाइट कलर है, ये लाइट कलर और ये लाइट कलर और ये लाइट कलर. ओके, तो नीचे के 3 स्फीयर. अच्छा, ऊपर एक स्फीयर क्या हो रहा है? इसको हाइड कर रहा है. तो इसके हाइड करने से क्या होता है? देयर आर 4 होल्स आर फॉर्म. 4 होल्स मतलब क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो यहाँ पे देखो ये पहले स्ट्रक्चर ऐसा था, नीचे वाला जो आपका जो लाइट कलर है, ये 3 स्फीयर एक दूसरे को ज्वाइंट है, उसके ऊपर मैंने एक स्फीयर डाल दिया ऊपर. तो देखो होल्स नजर आएगा नीचे, यहाँ पे एक होल्स आएगा, यहाँ पे एक होल्स और यहाँ पे एक होल्स. ओके, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ formation of the tetrahedral voids. And in case of the octahedral voids, 6 spheres are joined to each other. Okay, so in this arrangement, okay, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ कि octahedral voids कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, प्लीज देखो अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे जनरेट होता है? ये जो आपकी जो नीचे वाली लेयर है, ये लेयर, यस, ये 2 एटम और ये
3 एटम, ये 3 एटम क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं नीचे से। तो ये 3 स्फीयर नीचे से हो गया। अब 3 स्फीयर ऊपर से कैसे हो गया, ये स्फीयर, ये दिस वन एंड दिस वन, ओके। तो टोटल कितने स्फीयर्स हो रहे, ऊपर के 3 हो गए, ऊपर के 3 और नीचे के 3। So there are 6 pairs joined to each other like this. So the coordination of, sorry, here the generation of poles are 6. So that is called as a octahedral word. यहाँ पे क्या होता है, octahedral, sorry 8 words form होते हैं, तो इसको हम कहते हैं octahedral words. So which is given by the formula. Number of these type of words depend upon the number of close packed structure or close packed sphere. So here let the number of close packed sphere will be n. For the octahedral words we write n, and for the tetrahedral words we write 2n. We know that कि जो octahedral में क्या होता है, octahedral equal to, हम ऐसे ही बोल सकते हैं, octahedral words is equal to 2 times tetrahedral words, क्योंकि टेट्राहेड्रल वर्ड्स में कितने होल्स होते हैं, 4, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में कितने होते हैं, 8। तो मतलब उसमें 4 ज्यादा है, तो n इज इक्वल टू 2 टाइम्स n भी हम लिख सकते हैं, ओके। लास्ट वन, प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर, दैट इज अ ABC टाइप्स। वंस अगेन प्लेस हियर, ये आपकी जो नीचे वाली लेयर है, जो मैंने ए लेयर दिखा यहाँ पे, दिस ए लेयर इज 2 डायमेंशन। अब इसके ऊपर हम एक लेयर और ऐड कर दिए, दैट इज अ बी लेयर, एक लेयर और ऐड कर दिए, दैट इज सी लेयर। तो आई कैन से दैट कि जो आपकी जो फर्स्ट लेयर है वो डायरेक्टली आपकी 4th लेयर से ज्वाइन होगी, जो आपकी सेकेंड लेयर है वो आपकी 5th लेयर से अलाइनमेंट होगी, और जो आपकी थर्ड लेयर सी लेयर है वो नेक्स्ट आपकी 6th लेयर से अलाइन होगी। तो फर्स्ट लेयर इज अलाइन विद द 4th, second layer is aligned with the 5th, and third layer, that is C layer, is aligned with the 6th layer, okay. Once again same here, if we talk about the coordination number, if I select any of the middle layer or above layer, okay, so coordination number will be 12, because on the layer atom is touches 6 neighbor, 3 below and 3 above, and this pattern and this ABC types of arrangement give rise to cubic close packed or face centered cubic structure, okay. So here this is a 3-dimensional arrangement of the sphere, which is we have end with the topic, that is a close packed structure.